Welcome to the Muluka Academy. Myself Anil Kumar Khija. So today I will deliver the lecture on trigonometry, class 10th. So this is class 10th, topic trigonometry. So as we have started with lesson with the various t ratios, then the t ratios of specified angles, then after that we have moved on to the trigonometric identities, and we were proving the some of the more trigonometric identities today. So the first question, we have to prove this trigonometric identity. We are given this question. First is, if cos alpha upon cos beta is equal to m, cos alpha upon sin beta is equal to n, then prove that m square plus n square into cos square beta is equal to n square. So this we want to prove. So as I have told you, this is very much easy to prove any identity. So we are given with the two sides. We will start with the one side and move to the other side using the various trigonometric identities and formulas. So we start with this. We have m square plus n square, and we are given with the values of m and n. We will substitute the values of m and n into it. So m is cos alpha upon cos beta, and we have got square to it, plus n. n is cos alpha, again square upon sin square beta, take it into the bracket, then we have got cos square beta. This is your left hand side, and we will move. What is common in this? We have got numerator as cos square alpha in both the terms, so we will take it out as common. So this will be cos square alpha 1 upon cos square beta 1 upon sin square beta cos square beta. So this will be cos square alpha, so cos square beta sin square beta, and this comes to this side, this will become sin square beta plus cos square beta cos square beta. So this will be sin square beta plus cos square beta will be equal to 1, because this is a square identity. So this will become 1 into cos square alpha cos square beta upon cos square beta sin square beta. So as we can cancel cos square beta from numerator and denominator, we will left with cos alpha upon sin beta, and it is square to both the terms. So we will put the square outside the bracket, and we can check that cos alpha upon sin beta is equal to n. So this will be equal to n square. So this is equal to same as right hand side, which we want to prove. So this is our the proof of this question. Then moving on to the next question, we have question second. We have to prove if a cos theta plus b sin theta is equal to m, a sin theta minus b cos theta is equal to n, then what we have to show? Then prove that a square plus b square is equal to m square plus n square. So very simple question. What we have to do? We have to pick one side, either left hand side or the right hand side, and it is very much clear that if we pick the right hand side, it is easy to fill the values of m and n, because we are given m and n in terms of a cos theta plus b sin theta
and in another value of n is a sin theta minus b cos theta. So we will put the values of m and n in right hand side. So using right hand side, we have m square plus n square, this will be equal to, substitute the value for m. What is m here? A cos theta b sin theta whole square plus n is a sin theta minus b cos theta whole square. Now we will use the formula. We know the formula is, so we can write the formula here. This is, we will be using either a plus b whole square, this will be a square, b square plus 2ab, or a minus b whole square, this is given by a square plus b square minus 2ab. So we can use this formula to solve the upper brackets. A cos theta plus b sin theta, we will use the first formula. So this will be your a square cos square theta, b square sin square theta, 2ab cos theta into sin theta, and then next is plus we have got a sin theta minus b cos theta square. So this will be a square sin square theta b square cos square theta minus 2ab sin theta cos theta. So these two cancels out, and we are left with, we take these two terms, that is a cos square theta plus a sin square theta, and we take a square common out of it. So what do we get? A square common, this will be cos square theta plus sin square theta, and from here also b square, take b square common, it will be sin square theta plus cos square theta, and we can check this is equal to 1, again the square identity, it will be equal to a square into 1 b square into 1. So this will be a square plus b square. So this is your left hand side. This we want to prove. So it has been proved. Now moving on to the next part, before that we have to rub this part. Then third question in this is, prove that 1 minus sin theta plus cos theta whole square. Question 3 is 1 minus sin theta plus cos theta whole square is equal to 2 into 1 minus sin theta 1 plus cos theta. This we want to prove. So here what we will do, we apply the formula again, a plus b whole square, this will be equal to a and this will be b. So this is a plus b whole square. So here what we will do, this will be your 1 minus sin theta whole square plus cos square theta. We are using left hand side and we will move to the right hand side. Again we have got a minus b whole square. This is a square b square plus 2a into b. Now again we use a minus b whole square, which is 1 square is 1 sin square theta minus 2 sin theta plus cos square theta plus 2 1 minus sin theta into cos theta. Now this will become sin square theta plus cos square theta is again 1, and 1 is this, so we can write 1 plus sin square theta plus cos square theta
minus 2 sin theta plus 2 cos theta 1 minus sin theta. So this will become 1 and 1 is 2 minus 2 sin theta plus 2 cos theta 1 minus sin theta. Now this will be, take 2 common from here, you will get 2 1 minus sin theta plus 2 cos theta 1 minus sin theta. Again take 2 1 minus sin theta as common, we will get 1 from this expression, and from here you will get 2 1 minus sin theta out, and this will be 1 plus cos theta. So this is your right hand side. So hence proved. So यही हम शो करना चाहते थे, ये इसका शो हो. ओके, देन क्वेश्चन 4th इज, इसे में ही आगे है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 if sin theta plus sin square theta is equal to 1, then prove that cos square theta cos theta raised to power 4 is equal to 1. This we want to show here. So what we are given, solution is, we are given here sin theta plus sin square theta is equal to 1 we have. So this is given to us. Now sin theta will be equal to, take this sin square theta to other side, it will become 1 minus sin square theta. And what is 1 minus sin square theta? We can write for this as cos square theta, because of the square identity. Here also we have used sin square theta plus cos square theta is equal to 1, and obviously 1 minus sin square theta will be equal to cos square theta. So this will be your, now squaring both sides, we get sin square theta is equal to cos theta raised to power 4. So this will be, again we write for sin square theta as 1 minus cos square theta is equal to cos theta raised to power 4. So this will be 1 is equal to cos square theta plus cos theta raised to power 4. So this will be your answer. This we want to prove, so hence proved. So then moving on to the next part. So first we will rub this part. So the next part in this question is, question number 5th is, we have to prove sin theta upon cos theta. Question 5th, sin theta minus cos theta upon sin theta plus cos theta plus sin theta plus cos theta upon sin theta minus cos theta upon 1 minus 2 sin square theta sin square theta minus 1. So again we use the left hand side. So this is the algebraic addition of the two expressions. So for this two fractions, so what we will do, first we will take the LCM of the
two numbers which are given below. So we write as such because nothing is common in them. So this will be sin theta plus cos theta, sin theta minus cos theta. Then multiply this with this will become sin theta minus cos theta whole square, plus again multiplying this with this will be sin theta plus cos theta whole square. This is a minus b whole square, so we can write as a square sin square theta plus b square cos square theta minus 2 sin theta cos theta, and for this sin square theta plus b square cos square theta plus 2 sin theta cos theta upon, and this is a plus b, a minus b. This will become a square minus b square. So this will be sin square theta minus cos square theta. So this cancels out. So this will be 1, this will be 1. So this is 2 upon, we can change cos square theta to 1 minus sin square theta, and this turns out to be 2 upon sin square theta minus 1 plus sin square theta, and this is 2 upon sin square theta is 2 sin square theta minus 1. So this will be the result which we want to prove. So this was 2 upon, which is equal to right hand side, hence proved. So this we want to show. So likewise we can solve the other part. So in this, what we have got, question number 6 is express all t ratios in terms of sin A. So what we are given? We are given a right angle triangle A, B, C. We want to express all the t ratios in terms of sin A. So what will be the sin A? So you can get it here. So this will be your sin A will be equal to, we know that sin A is given by perpendicular over hypotenuse, and we can write this expression as sin A upon 1, and comparing the two expressions, two fractions. So we say that perpendicular and hypotenuse are in the ratio of sin A is to 1. So if we put sin A as perpendicular as sin A, then its hypotenuse will be 1. Now what we want to find? We can find all the t ratios if we know the third side. We can find the third side just by applying the Pythagoras theorem. So by Pythagoras theorem we know that sin square A plus AB square is equal to 1 square, and AB square will be equal to 1 minus sin square A, and AB is equal to under root of 1 minus sin square A. So this is your third side, root of 1 minus sin square A. Now we can write all the t ratios. Sin A is given as such. Now what will be the cos A? Cos A is given by base upon hypotenuse, which is under root of 1 minus sin square A. What is tangent A? This is given by sin A upon, or we can say tangent is perpendicular over base. So sin A upon root of 1 minus sin square A. Then remaining three ratios we have to just get the reciprocal of these three. So we can write cosecant A is 1 upon sin A, secant A is reciprocal of cos A, so that will be 1 upon root of 1 minus sin square A. Then cot A is given by under root of 1 minus sin square A upon sin A. So this we have proved that we can express all the t ratios in terms of sin A.
So we will move to the next part, but before that we will rub this part. So next what we will do, now we have to express all the t ratios in terms of secant A. Question 7th is express t ratios in terms of secant A. So again we have got a triangle, A is angle, this is B is right angle, then C. Now we have secant A is equal to, secant A we can give as hypotenuse upon base. So we can say that hypotenuse and base are in the ratio of secant A is to 1. If hypotenuse is secant A, base will be equal to 1. Now we find the third side from here. So we know that by Pythagoras theorem, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. सो AC स्क्वायर इज सेकेंड स्क्वायर A, BC स्क्वायर इज, वो हमें पता करना है, AB स्क्वायर 1 है. सो BC स्क्वायर क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर A माइनस 1, और BC क्या आ जाएगा, रूट ऑफ सेकेंड स्क्वायर A माइनस 1. सो ये आ जाएगा हमारा परपेंडिकुलर सेकेंड स्क्वायर A माइनस 1 का अंडर रूट. नाउ वी हैव गॉट ऑल द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ सेकेंड A. नाउ वी कैन राइट द वेरियस t ratios. So secant A we are given, so first we write sin A. Sin A is given by perpendicular over hypotenuse. So this is root of secant square A minus 1 upon secant A. So this is your sin A. Then cos A is, again we want to know that it is 1 upon secant A based upon hypotenuse, and tangent is perpendicular over base, root of secant square A minus 1 upon 1. Then cosecant A is hypotenuse upon perpendicular, that is secant A in the numerator upon under root of secant square A minus 1. secant A वो तो हमें दिया ही है, secant A ही आएगा, और cot A, cot A क्या आएगा, tan कोल्ड कर दो 1 upon root of secant square A minus 1. So this will get you the things which we want to find. So okay, the next question in this is question 8th is, we have to prove this. Prove sin theta minus cos theta plus 1. Prove sin theta minus cos theta plus 1 upon sin theta plus cos theta minus 1 is equal to 1 upon secant theta minus tangent theta. So what we have done here, and using the identity, secant square A, secant square theta minus tan square theta is equal to 1. तो इसको हमने इससे प्रूव करना है, एंड वी आर गिवन इन द राइट हैंड आल्सो secant थीटा माइनस tan थीटा. सो इसी आइडेंटिटी से हम करेंगे.
सो हमें क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया है साइन और कॉस, और राइट हैंड साइड में हमने प्रूव करना है 1 सेकेंड माइनस टेंजेंट। सो पहले तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड में उसको सीकेंट या टेंजेंट में चेंज करेंगे। सो उसको कैसे कर सकते हैं, साइन का क्या बना सकते हैं, सीकेंट तो बनेगा नहीं, क्या बनेगा इसका हमारा टेंजेंट बन सकता है। कैसे बनेगा, कॉस से डिवाइड करके, कॉस कट जाएगा 1 रह जाएगा, आगे 1 कॉस वो सीकेंट बन जाएगा। सो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, इसको हमने डिवाइड करना है किससे, कॉस थीटा से। सो डिवाइड, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है हमने, और फिर क्या करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, वी गेट। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, साइन अपॉन कॉस टेंजेंट थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस अपॉन कॉस इज 1 प्लस 1 अपॉन कॉस इज सेकेंड थीटा अपॉन साइन अपॉन कॉस टेंजेंट कॉस अपॉन कॉस 1 माइनस सेकेंड थीटा। तो अब हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी टेंजेंट और सेकेंड में कन्वर्ट हो गई है। अब हम क्या करते हैं, इस -1 को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा -1, नीचे कुछ करने की जरूरत नहीं, वैसे ही रहने दो, टेंजेंट थीटा प्लस 1 माइनस सेकेंड थीटा। अब ये जो 1 है, 1 की जगह हम ये पुट करेंगे, जो हमने आइडेंटिटी दी है हमें पास, वो इससे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा -1 की जगह क्या आ गया, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन वही रहेगा, टेंजेंट थीटा प्लस 1 माइनस सेकेंड थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में इसको कर लो, सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा माइनस, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं हम, ए प्लस बी ए माइनस बी। सो ये हो जाएगा ए सेकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा प्लस 1 माइनस सेकेंड थीटा। तो इसमें क्या कॉमन लेंगे, सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, इधर से भी उधर से भी। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, इसको कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेकेंड थीटा। सो ये सारा कट जाएगा इससे। सो आप चेक करते हो, +1 है, माइनस सेकेंड है, प्लस 10 है, तो क्या बच गया हमारे पास, सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, और नीचे क्या बच गया, सब कुछ कट गया, तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो इसको हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसके लिए इसको हम अरेंज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, ताकि इस पे हम कंटिन्यू कर सकें। तो क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया था सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन, नीचे हमारे पास क्या है 1 की जगह फिर वो आइडेंटिटी लिखते हैं, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब ये आ जाएगा हमारा सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसमें प्लस कट जाएगा, वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 अपॉन सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये हमारा पार्ट था ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें हमने प्रूव किया है। सो यू कैन चेक, दिस इज़ वेरी मच इजी। सो हमने क्या किया है, सभी को हमने चेंज कर लिया, टेंजेंट और
सीकेंड में, तो वो तभी हो सकता है जब इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, कॉस थीटा से। पहले साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेंजेंट आ गया, यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे सीकेंड आ गया, और इसी तरह से नीचे फिर 1 की जगह हमने सीकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर उसके फैक्टर कर लिए। सो कॉमन फैक्टर है जो बाहर ले लिया हमने, बाकी कट जाएगा, वो कॉमन फैक्टर अपॉन 1 आ गया। सो 1 की जगह हमने कर दिया सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो उसके फिर दो फैक्टर बन गए नीचे, सीकेंड प्लस टेन, सीकेंड माइनस टेन, प्लस वाला कट जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। सो यही हमें चाहिए था, दिस इज राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। सो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट था। सो इसमें आई थिंक यू मस्ट हैव सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, और इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन कंटेक्ट अस। सो वी विल बी हेल्पफुल you at each and every step. So this is you whom to contact us. So अगर आप contact करोगे तो आपको हर तरह की help मिलेगी. So you won't get any doubt in your mind left behind. So thank you for listening to the lecture. Thank you.